Good morning, children. Welcome back to the social session. Children, we were learning about the parliament and central government in our previous classes, and now we move on to the subject of how the council of ministers and the prime minister get selected. We have already seen about the president and the vice president who are elected indirectly, but today we learn about the election of the prime minister and his council of ministers. पहले मैं एक होमवर्क भी दिया था आपको, how these prime minister and council of ministers get selected, but you people have written it wrongly, that they are not elected but they are appointed by the president, and on the advice of the prime minister the president appoints the council of ministers बोल के लिखे थे. But that is true, to some extent that is true, but original में जो क्वेश्चन था वो इलेक्शन के बारे में था. It is not about the appointment. The question is about the election but not about the appointment. That is the most important thing. And next, the prime minister and the council of ministers are originally chosen by the from among the members of the parliament. Either they should be a member of the Lok Sabha or they should be a member of the Rajya Sabha. राज्य सभा का मेंबर बोले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं तो मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर बनने के लिए पहले वो एमपी रहना जरूरी है. एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना हो पहले. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो ही मे बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, ही मे बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. ओके, मेंबर ऑफ लोकसभा बोले तो हु गॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल रह सकती है, नहीं तो राज्यसभा से इलेक्ट हुए से वाले भी रह सकती है. फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह था प्राइम मिनिस्टर. मनमोहन सिंह याद है आपको? नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. वो लोकसभा का मेंबर नहीं था, वो ही वॉज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, फिर भी he became the prime minister of the country. So in order to become the prime minister of the country, either you should be the member of parliament from Lok Sabha or Rajya Sabha. And the role of the parliament is not only to make the laws बनाने का काम ही नहीं रहता parliament का, और एक काम जो है, it also ensures that a suitable person is appointed and run the government according to the laws which are made in the parliament. So for this sake it is said that India has a parliamentary form of government. इसके वजह से इंडिया का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके, आवर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? the government will be appointed by the parliament. Okay, a suitable person will be appointed by the parliament, and he is also get elected from the, he is also appointed by the parliament. So the government has three major organs, as we have discussed earlier also: the executive organ, the legislative organ, and the judiciary organ. So the head of the executive organ, actually what the executive organ will do? The executive organ will implement the law. The legislative organ will make the law. The judiciary organ will punish the people who violates the law. These are the three organs of the government, whether it is a central government or whether it is a state government. इसके बारे में आप 7th क्लास में भी पढ़े थे. द मेकिंग ऑफ द लॉस इन द स्टेट असेंबली में ही पढ़े थे. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन और जुडिशियरी ऑर्गन के बारे में. मगर हम इधर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम क्या है? इट हैज़ टू इम्प्लीमेंट द लॉ. इम्प्लीमेंट द लॉ बोले तो जो लॉ बनाया उसका लागू करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव करना. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन कौन रहते? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते. एंटायर गवर्नमेंट रन्स इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली चिल्ड्रन. So the third organ is the judiciary, about which we will read in the next chapter, that is about the implementation of the laws में देखते, मगर that is a different story. We have removed it from the syllabus. The prime minister and the council of ministers are in charge of a large number of ministries, and they have a staff who work for them. As I told you, to prepare the list of portfolios of all the ministers: Home Minister Amit Shah, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. वैसे पोर्टफोलियोस और मिनिस्टर्स के नाम से एक चार्ट बनाने के लिए बोला था मैं. एंड दीज आर इन चार्जेस ऑफ ऑल दैट मिनिस्ट्रीज. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर, एंड ए स्मॉल सब ग्रुप of people become ministries and take up the work of running the government. And let us see how they run the government. Out of 543, only few members, at least 40 to 50 members will become the ministers, and with that group they run the entire government. So all decisions of the government of India are taken in the name of the president only. As I told you, the entire government will be run in the name of the president, and he is only a formal head of the country, but the real head of the country is the prime minister. मगर अमेरिका में वैसा नहीं है जी. अमेरिका में the real head of the country is the president only. उधर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता. That is a presidential form of democracy है. हमारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है.
So however, the president has to act on the advices given by the prime minister and his council of ministers. The president cannot do anything against to the advice of the prime minister. प्रेसिडेंट के नाम पे चलता, मगर पूरा जो पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथों में रहती. प्राइम मिनिस्टर जो बोलता वही प्रेसिडेंट करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं करना. अगेंस्ट टू द डिसीजन यू शुड नॉट डू इट. इफ यू डू इट द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. So president will act on the advices given by the prime minister and his council of ministers. You can recall in your class 7th also you have learnt about Vidhan Sabha, where the chief minister works, okay, and governor works on the advices of the chief minister. Similarly, a prime minister is chosen similarly by the members of the Lok Sabha. The leader of the party, that means largest party in the house, or the coalition party leader that wins the largest number of parliamentary constituencies will be appointed as a prime minister. And he will be invited by the president to form the government. The prime minister thus has the majority in the Lok Sabha. लोक सभा में मेजॉरिटी बोले तो क्या है? लोक सभा में मेजॉरिटी बोले तो हमारा पूरा लोकसभा सीट्स क्या कितने हैं? 543. इसमें 270 इज द मैजिक फिगर. इससे ज़्यादा आया तो मेजॉरिटी है. जिस पार्टी को, जिस कोएलिशन को, कोएलिशन बोले तो क्या है जी? कोएलिशन बोले तो 2 से ज़्यादा पार्टीज फॉर्म होके एक ग्रुप बने, सो वाले को कोएलिशन बोलते. एनडीए बोलते हैं उसको. अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है वो एनडीए, नरेंद्र मोदी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. और यूपीए है. यूपीए बोले तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. ये एक कोएलिशन है. इसमें एक 10-15 पार्टियां हैं मिलके एक ग्रुप के जैसे बन गए, और इसमें भी एक 10-15 पार्टियां हैं, वो ग्रुप बन गए. वो एक ग्रुप को ये नंबर आया तो इसका लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनता. ये ग्रुप को 270 आया तो इसका ग्रुप का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता. इसका ग्रुप का लीडर जो है मनमोहन सिंह था, वो प्राइम मिनिस्टर बना था. ओके, अब इस ग्रुप का लीडर जो है नरेंद्र मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर बना है. सो द पार्टी और द अलायंस कोएलिशन विच गेट द मेजॉरिटी पार्टी और विच गेट largest number of parliamentary constituencies, that leader will become the prime minister. He will be invited by the president to form the government, and on the advice of the prime minister, the president will appoint the remaining council of ministers. Already you have written about that. So we will see about more in detail about the council of ministers in the next class, children. Thank you.